Alaikum friends, my name is Muhammad Abbas and you're watching Learn English Grammar with Muhammad Abbas. I hope you guys are fine. Guys, if you like my videos, please subscribe to the channel and press the bell icon so that you will get my more new videos as soon as possible. So today our topic is during. So in this video I am going to explain during. Now what is during, how to use it, where to use it, and what is the usage of it. Is this clear? So let's come to the topic. आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्यूरिंग क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या इस्तेमाल है और कहाँ इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं. इज दिस क्लियर? सो सी, ड्यूरिंग इज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, राइट? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. According to the grammar, during is a preposition of time. Grammar के लिहाज से during a preposition of time है. Is this clear? See now what does it mean? What does during mean? During means within a period of time. So in English, during means within a period of time. Is this clear? In Urdu, during का मतलब है के दौरान, के दौरान. Is this clear? Now what is the usage of it? See, during is used to say when something happens. See the usage of during. During is used to say when something happens. Whenever something happening, or whenever something happen, or whenever something is going to be happen, right, or done, then we use during. Is this clear? इसका इस्तेमालात क्या है? During का इस्तेमालात क्या है? देखिए, during is used to say when something happens. During उस हालात के बारे में बताता है जब कोई चीज़ वाक़या होता है, कोई चीज़ वाक़या होता है, तो फिर हम ड्यूरिंग इस्तेमाल करते हैं, या ड्यूरिंग फिर उस वाक़या या उस हालात के बारे में बता देता है. इज दिस क्लियर? सी वी हैव अनदर स्टेप. ड्यूरिंग इज नॉट फॉलोड बाय a specific day, month, hour or year. See, during is not followed by a specific day, month, hour or year. It means that, or it says that we can use during with everything, like period of time, right? Like morning, evening, day, night, month, hour, year. Is this clear? So we can use with all. I hope you understood it. See, this tip का क्या मतलब है? During is not followed by a specific day, month or hour, year, right? So इसका मतलब ये हुआ कि हम during जो है किसी खास दिन या फिर महीने या घंटे या साल के साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते. हम वक्त के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रात, दिन, सुबह. इज दिस क्लियर? तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सी द एग्जांपल. आफ्टर एग्जांपल यू विल कम टू नो. आई visited to the park during the night. See, I visited to the park during the night. As I told you that we do not use, or during is not followed by a specific day, month, or year. We can use it with night,
morning, evening, afternoon, so we can use with all, right? So here you can see I visited to the park during the night. So now what does this example mean? This example means that I went to park at night. I went to park at night. Is this clear? इस एग्जाम्पल का क्या मतलब है? I visited to the park during the night. इस एग्जाम्पल का मतलब यह है कि मैं रात के दौरान पार्क गया था. मैं रात के दौरान, जैसे कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान. तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि सी आई विजिटेड टू द पार्क ड्यूरिंग द नाइट. मैं रात के दौरान पार्क गया था. इज दिस क्लियर? सी वन मोर एग्जांपल. वी प्ले फुटबॉल during the day. So see the second example. We play football during the day. Now what does this example mean? This example means that we play football at daytime. In the daytime, we do not play football in night, right? We play it daytime. Is this clear? इस एग्जाम्पल की क्या मतलब है? We play football during the day. इस एग्जाम्पल का मतलब यह है कि हम फुटबॉल दिन के दौरान खेलते हैं. हम फुटबॉल दिन के दौरान खेलते हैं. जैसे कि आप लोगों को पता है कि ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान. तो हम कह सकते हैं वी प्ले फुटबॉल ड्यूरिंग द डे. हम फुटबॉल दिन के दौरान खेलते हैं. इज दिस क्लियर गाइस? सो इट वाज द एंड ऑफ वीडियो. नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. इफ यू हैवंट अंडरस्टूड इट, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिले. थैंक यू सो मच.